Hello, hi students. This is again Deepa with you regarding personality disorder part 3. It's the last part we can discuss. That the last classification clusters the personality disorders and overall management of the personality disorders we can see today. This is about avoiding personality. This avoidant personality disorder people having this disorder also have other psychiatric disorders like social phobia, anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, depressive disorder and somatoform disorders हो सकता है. So जिसको भी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है ये उनको ये सोशल फोबिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. And then dependent personality disorder. Dependent personality disorder, the word itself says that the person is dependent on someone for decision making, for taking care of him, someone should be there. So this disorder is characterized by an extreme need to be taken care of. मतलब उनके लिए एक्सट्रीम नीड है जो उन खुद को टेक केयर करेंगे on which leads to submissive and fear of separation and rejection. So उनको ये लगता है कि they are not up to the mark and they won't have that capability to take decisions and all. So due to this lack of self confidence, extreme मतलब उनको कोई रहना चाहिए उनका जो देखभाल करने के लिए. तो उस समय क्या होता है दे फील दैट दे आर समथिंग सबमिसिव मतलब वो खुद को नीचे सोचते हैं मतलब नीचा दिखाना एंड उनका जो आई एम नॉट टू स्मार्ट, आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट, आई एम अनेबल टू टेक डिसीजंस ऐसा रहता है. सो उनको क्या होता है कि उनकी जो कमी के कारण उसको फियर ऑफ सेपरेशन का फीलिंग रहता है, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन मुझे कोई रिजेक्ट करेंगे, मना करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सब फीलिंग्स रहता है. सो विद दिस पीपल विद दिस डिसऑर्डर लेट अदर्स मेक important decisions about them. Let others can make important discussions for them and have a strong need for constant reassurance and support. मतलब they won't take any self decisions, own decisions वो कभी नहीं ले पाता है. उनको हमेशा एक पर्सन रहना चाहिए वो हमेशा reassurance and support provide. And signs and symptoms of this dependent personality disorders are feeling uncomfortable and helplessness, inability to make decisions, and low self-esteem, and lack of self-confidence and hypersensitivity. Next, obsessive compulsive personality disorder. Here, the individual places a great deal of pressure on himself and others do not make the mistake. उनको ये इसमें क्या रहता है कि he should be एकदम perfect, and so to get the perfectionism he'll keep more pressure on himself and others. So खुद भी मिस्टेक नहीं करना चाहता है और अदर्स को भी मिस्टेक नहीं करना देते हैं. तो इसके लिए ये क्या है दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन डाल सकते हैं और एक्सप्लॉइटिवनेस दिखा सकता है. So he believes his way of doing something is the only correct way. उनको ये लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं this is the right way. So he forces himself and others to follow right moral principles. वो खुद को और दूसरों को भी राइट मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करने का सोचता है. एंड signs and symptoms of this personality are feeling excessive doubt and caution. बहुत डाउट रहते हैं इन लोगों में और बहुत ज़्यादा केयर रहते हैं एंड मतलब प्रोटेक्टेड जोन में रहने की कोशिश करते हैं. तो परफेक्शनिज्म चाहते हैं और हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. एंड ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर फर्स्टली एंग्जाइटी ड्रग्स वी हैव टू गिव to treat the severe stress and anxiety. Benzodiazepines we can give like alprazolam, diazepam, librium, Ativan. These are the drugs and neuroleptic drugs. Those are nothing but antipsychotic drugs we can give in paranoid personality disorder and schizotypal personality disorder.
Those are olanzapine, haloperidol, droperidol. We can and coming to the psychotherapy, here we can provide insight-oriented therapy. This therapy is focusing on the unconscious processes as they are manifested in a person's present behavior. और जो भी उनका जो प्रेजेंट थिंकिंग है, हाउ ही इज बिहेविंग, वो पर्सन को दिखाते हैं. तो हियर काउंसलर का वो क्या फोकस करता है कि ये काउंसलिंग फोकस ऑन हेल्पिंग क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड देयर ओन इनर वर्किंग्स एंड मोटिवेशंस. विद दिस थेरेप्यूटिक फिलॉसफी, therapist encourages the client to examine their past relationships and the way in which these dynamics have shaped their present. So mostly is इसमें क्लाइंट सेंटर्ड रहता है. इसमें टॉक थेरेपी दैट गाइड्स द क्लाइंट टुवर्ड्स द डेवलपिंग एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको थेरेपी दिया जाता है, टॉक थेरेपी. And the goal of psychodynamic therapy is the client's self-awareness and understanding of the influence of the past or present behavior. उनको ये इंसाइट कराता है कि उनकी जो भी पास्ट बिहेवियर के कारण अभी उनका प्रेजेंट बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस वो दिखाते हैं. नेक्स्ट इज द CBT, cognitive behavioral therapy. Most of the cognitive behavioral approaches addresses the specific aspects of thought, feelings and behavior or attitude and do not claim to treat the entire personality disorder of the person. यहाँ पर मेन फोकस उनकी थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स के ऊपर रहता है. इसमें कंप्लीट पर्सनालिटी को चेंज नहीं. In conclusion, abnormal personality can be defined as a deeply ingrained maladaptive behavior and continuing throughout the most of the adult life and becoming more or less maybe in the middle and old age. So personality disorders are different from mental illness, whereas the symptoms of personality disorders are continuous and start from the adolescence and or even before. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का जो सिम्टम्स है वो एडोलेसेंट में भी स्टार्ट हो सकता है, एडोलेसेंट से भी पहले भी सिम्टम्स स्टार्ट हो सकता है. एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज नॉट ए मेंटल इलनेस. दिस इज ओनली a maladaptive behavior only and it is long lasting and it produces the distress to the individual and to the other. Thank you. Today I have completed my class on personality disorder. If you want to get complete notes on personality disorder, so please refer my personality disorders video class on part 1, part 2 and part 3. So in the first part 1 I have discussed about the introduction and what is personality and what is personality disorder and what are the etiological factors of personality disorders and the classification. And in part 2 I have discussed about the signs and symptoms and in detail about the classifications, cluster A, cluster B and cluster C personality disorders I have discussed. And in the third part I have discussed about the cluster C personality disorders and the treatment and management of the all three personality disorders. Thank you so much students for their for your constant listening to my class. Thank you. Kindly subscribe our SHUI Nursing YouTube channel so that it will help you a lot and during the time, during this lockdown time and also after that before exams you will get the any doubt you can go through this our videos. Thank you once again. Have a good day.